scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipment in metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicraft. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. Village industries, one district, one product, ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation.
creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREADS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREADS platform. 3. Link GEM with TREADS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREADS receivables as asset-backed securities, helping a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as AI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mainly in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to 1.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, proposed to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote equitable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra.
Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train us skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years. For city economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce
a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers
combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing full medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and use products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facility sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is I propose to establish through Challenge Route a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating city townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, girls' hostel will be established in every district.
to promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskills in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digital places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakigadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector, employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate A, development pathways supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship,
with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to induction and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. Propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized support. She-Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She-Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations
through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kauk Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. The sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As with the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31.
In line with this, the GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this August House that I fulfilled my commitment 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure 9.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax. Any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of mass services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable
obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore. Immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. Non-production of books of account
and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies of 1/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for this is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, opposed to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on test. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions.
provide fillip to toll manufacturing in India. I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure status in the Indian accounting standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We relaxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions,
I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified which is currently available for exports of leather or synthetic footwear to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. In addition, in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. Utilize the customs duty structure for goods imported for personal use. I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer
was to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife, counting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods.
Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रधानमंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Namaskar viewers, hello and welcome to this continuing coverage of the Union Budget 2026-27. I'm my colleague Manoj Verma. So you heard the Finance Minister Nirmala Sitharaman presenting the Union Budget 2026-27, also introducing the Finance Bill. She's made history today as she presented her 9th consecutive Union Budget under the leadership of Prime Minister Modi. This, viewers, is also the first time in India's fiscal history that the Union Budget has been presented on a Sunday. We'll discuss some of the proposals and the key highlights of this budget speech, which extended nearly 1.5 hours, some of the key announcements that the Finance Minister made. In fact, the proposals in the budget, she said, are aimed at boosting growth, meeting people's aspirations, most importantly, enabling inclusive development. So the key highlight of the budget 2026-27 is that India has set a lower fiscal deficit target and for FY27 with a reforms push. Just to put it into numbers, for the financial year 2027, the capital expenditure has been set at 12.2 lakh crore rupees. The fiscal deficit target has been set at 4.3% of GDP in FY27. In fact, if you heard the Finance Minister, she said she fulfilled her commitment that she made in FY 2022 to reduce the fiscal deficit below 4.5% of the GDP. Also, in revised estimates 2025-26, the fiscal deficit is at 4.4% of the GDP. The debt to GDP ratio is estimated at 50 fund budget estimates 2026-27 versus the 56.1% in revised estimates 25-26. FY 27 expenditure is estimated at 53.5 lakh rupees. The revised estimates of expenditure in FY 2026 were 49.6 lakh crore rupees. So a significant jump there as far as the numbers are concerned. Also, FY 27 net market borrowing from securities is estimated at 11.7 lakh crore rupees. The gross market borrowing is seen at 17.2 lakh crore rupees. The net tax receipts estimated at 28.7 lakh 7 will bring you charts and graphics related to it for you to understand better. These are just some of the numbers that we were able to pick up from the Finance Minister's speech. So in a few moments from now, our production team will be able to put out charts and graphics for you to understand better those numbers and the comparative data of how these numbers stand compared to the previous budgets. Also, the states, they will be getting 1.4 lakh crore rupees as the Finance Commission grants. These were about the important numbers, Manoj. Let's now quickly give our viewers a recap of some important announcements and statements that the Finance Minister spoke about, especially in terms of closer and aligns it with our Viksit Bharat vision. जी बिल्कुल टीना जी, अगर आज के बजट की हम बात करें, जिस तरह निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है और 3 कर्तव्य खास तौर से बताए हैं सरकार के, और ये 3 कर्तव्य जो हैं वो विकसित भारत का एक रोड मैप सरकार ने प्रस्तुत किया है देश के सामने कि कैसे सरकार जो है देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, उसको लेकर काम करेगी। साथ ही जो जन आकांक्षा हैं, मतलब जन आकांक्षाओं से मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम आदमी से जुड़ी पहलू हैं, उन पर कैसे काम करेगी। इसी प्रकार सरकार ने 3 अपने कर्तव्यों के साथ देश को विकसित भारत के रोड मैप पर ले जाने का इस बजट के माध्यम से निर्मला सीतारमण जी ने की है। जाहिर तौर पे बजट में गांव, गरीब, किसान सरकार की प्राथमिकता में है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार ने बूस्ट करने का काम किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का खासा फोकस रहा है। बायो फार्मा सेक्टर के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोला है और सेमीकंडक्टर को लेकर भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐलान इसमें किए हैं। हम जो पॉइंट्स हैं बजट के, उन पे चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ टीना, और दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का संदेश क्या है, मायने क्या हैं। Certainly, as Manoj rightly said, the contour, the overview of the budget is that the Prime Minister, under the leadership of the Prime Minister, has proposed interventions in 6 areas. And the budget revolves around these 6 areas, which includes scaling up manufacturing is in 7 strategic and frontier sectors. The FM spoke about rejuvenating legacy industrial sectors, creating champion MSMEs, again, key driver of our growth. So special attention has been given to that sector as well. Also delivering a powerful push for infrastructure. So in addition to expanding some of the already existing schemes, there are several key announcements, new announcements that the Finance Minister has also made in this regard, ensuring long-term security and stability. And another key dimension that you will find in the budget is developing city economic regions. So we'll discuss
discuss with experts who are joining us in the studio. We'll also have industry leaders join us virtually to talk about what they think about the budget and, most importantly, how it aligns with our Viksit Bharat roadmap. Joining us are two guests in the studios. Let's begin the program by introducing them to you. Delighted to Dr. Aman Agarwal, Director, Indian Institute of Finance, and Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. Thank you, gentlemen, for joining us on the program. To begin with you, Professor Agarwal, how would you sum up the budget? Let's begin the program with that. No, I think the budget has laid down the path for a $5 trillion economy, and the Viksit Bharat program of the Government of India in terms of introducing not only the growth which can be felt by the common man. I think almost all segments of the society have been touched upon. The capex has been kept almost consistent to bring in growth and the stability in the economy, and the fiscal prudence which this government has introduced for almost over a decade now is reaping fruits, as the Honorable Finance Minister also pointed out that her commitment has met ground, so 4.5% and targeting further down going forward. I think the GDP numbers in the last 2 quarters have shown clearly that the 7.4% projected in the economic survey might even get surpassed if we are able to get a similar kind of a jump as we've seen in quarter 2, quarter 3 this year. In fact, crossing 7.5 if possible, because all the factors which are there are so positive, giving a positive rebounding effect. And in fact, the budget has laid down a pathway which industry across the globe and within the country looks upon for introducing investments in the country in different segments. And in my opinion, none of the segments, whether it is social sector, rural development, or agriculture, healthcare, education, you talk of a sector, it has been looked upon even from a macroeconomic contributor and given not only roads and railways but even city infrastructure, meeting the AI needs and structures which are there, the latest to be there. She's also talked about employment and how different sectors will induce employment through her schemes which she has proposed in the budget. I think the budget is a way forward beyond, as we say, India is more like an elephant. It is like been added the wings of a jet to go forward at a very fast speed, like the BrahMos is making a mark globally for India. Similarly, this budget will make a mark for this country. Absolutely. Before we proceed, Manojji, two more guests have joined us virtually. Professor Ashok Vishandas, he's Professor Applied Economics, IIPA, and ex-chairman CSCP, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and Mr. Riaz Tingna, he's a part Grant Thornton Bharat. Thank you, gentlemen, for joining us on the program as well. We'll get reactions from you in just a bit. Let me first get in Professor Saha. He's been waiting for long. Professor, your first reaction to riding the expectations. There were huge expectations of this budget. So how do you look at it? Is it a growth budget, a reform budget, or a mix of both? Yeah, thank you for having me on the show. Once again, this has been a very remarkable budget in terms of the sectors that it has covered. It is an all-round budget. And it must be seen in continuity to the previous budgets, particularly the post-COVID budgets, when we were focusing not only on growth but also to ensure the supply chain resilience for the economy. And this year, in continuation to the push to Atmanirbharta and Make in India, we see critical enablers being activated for the industrial sector, particularly the 7 sectors that the Finance Minister has particularly mentioned in her budget speech. We have also seen in the economic survey, which has categorically mentioned about the dynamism both in the industrial sector as well as the services sector in terms of its export potential as well as the importance for the economy. Overall, Finance Minister has touched upon key enablers for energizing both industrial and the services sector, because those are also the areas where addition would come from along with employment. But at the same time, we must remember that in the last few years, there has been huge push to revitalize the rural development sector. The agriculture, we see no difference from that, and the continuity for a holistic rural development alongside very, very healthy economic growth of the urban centers, facilitating the roadmap for the MSMEs and other sectors would be key takeaways for me from this budget.
जी बिल्कुल शाह जी, और अगर बात इसकी की जाए कृषि क्षेत्र की, बात तौर पे सरकार का जो फोकस रहा है वो खेती किसानी पर रहा है, और एआई के जरिए कैसे देश का उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे किसान को और खेती को टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत किया जाए, इस मिलता है। डॉक्टर अशोक विशन दास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि खेती किसानी सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से रही है। पिछले एक दशक में देखा है सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं देश में उत्पादन बढ़ाने को और किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए। इस बार के बजट में जिस तरह से एआई का उपयोग करते हुए देश में उपज को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, इस पहलू को आप कैसे? अशोक जी, आप जी, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। Sorry, I hope I am audible. Yes. जी। Yeah. So the two things. One thing I want to make it very clear, because the emphasis is on not just increasing the production but increasing the productivity. These are two different concepts. Earlier, the government used to say until 2014 to increase the production, and increase the production does not necessarily translate into the increasing the income. So that government has recognized during last 11-12 years that increasing production is not the necessary condition, but increasing productivity does increase the income. So having said that, there's a lot of emphasis in this budget to increase the productivity and production emphasis on those items which are in great demand, because how the farmer get the higher prices is through the demand, not simply increase number of cases in the history not long ago in 2012-13, when the production of, say, for instance, the groundnut increased manifold, very significantly, but the farmers went down because the prices crashed. So government is conscious of this fact, and the emphasis is on high value production. Just to give few examples, sandalwood is in great demand, so the government has recognized the need for this. And then medicinal plant, even farmers are being roped in to increase the medicine, and how this will increase, there is a lot of emphasis and campaign for establishing of All India Institute of Ayurveda, which is one as of now in India, but there are 2 or 3 more has to be established in near future. For that, Ayurveda production will also, that's very high value, and people are getting increasingly conscious of value of this without side effect, not only in India but outside India. So there is a great demand. Farmers will get benefited for medicinal, and then the marine products, lot of emphasis on this, because increase in production of fish, dairy, because those are the sectors which are high value. India is the leading, not only leading, but the top country which produces the milk, and likewise in the production of fisheries, and then other crops, the medicinal value, the sandal, the coconut, the cocoa, and things like that, which command high prices. So value is emphasized on this, and therefore I'm sure, and then technology in the agriculture will help a lot to the farmers to increase their income, because the income increase is most important, not the production. And increased income can be attained by increasing the productivity, not necessarily increasing the production. That is what the budget contains. That's right. In fact, just a quick recap of the kind of special attention that has been given to farmers. The Finance Minister said in her speech that the effort is to empower the vulnerable to access mental health and trauma care. So in addition to increasing farmers' incomes and expansion of the already underway schemes, there are initiatives underway to develop reservoirs, to strengthen fisheries value chain, especially in the coastal areas. She announced support to animal husbandry through a credit-linked subsidy program, encouraging creation of livestock farmer-producer organizations, support to high-value crops like coconut, sandalwood, and cashew in the coastal areas which have high potential, but initiatives which will perhaps now focus more on these areas to support the generation of walnuts in the hilly regions, to enhance competitiveness in coconut production, and to launch a dedicated program proposed to the Indian cashew and cocoa. So all these announcements perhaps aimed at harnessing the potential of these areas
and making sure that special attention is given to the farmers so that their incomes can also be increased, and that, you would recall, has been one of the focus areas of Prime Minister Modi's government since 2014. Mr. Riaz Thegna is also joining us. He is a partner tax Grant Thornton Bharat. Mr. Thegna, thank you for joining us on the program. The first reaction on the budget, what is it that stood on the Union Budget 2026-27, which again aimed at continuity and growth-oriented measures? No, absolutely. I think one of the most is the consistency with which the policies are followed. The emphasis towards reforms, simplification continues. Fiscal prudence is being followed religiously, and that is really showing results. But in addition to all this, what we are seeing now is an emphasis on, enriching or developing human capital. So through the AI awareness, we are deepening in the financial sector, expansion of the concept of infrastructure from physical to an overall institutionalized skill development infrastructure. These are the areas which are going to help all the different categories of people, more inclusivity, and I think then the real issue of inequalities of income can also be addressed much better. So I think that kind of an all-rounded feature of this budget stands out, and the commitment towards decriminalization, making simplification of laws, again, remains untouched. So it's, I think, a very, very focused and consistent budget. So at a time when, the global economy is uncertain, do you think the budget has done enough to not just accelerate India's growth momentum, but help us build greater resilience in order to keep us insulated from the volatilities about which the economic survey also warned about? No, absolutely, because firstly, you're talking about an emphasis on manufacturing, support to manufacture. There is an additional emphasis, focus on technical inputs, AI, etc. In fact, cloud-based services which are using Indian data centers have been exempted from tax. Those kind of approaches have ensured that there will be more amount of income flowing in. There is some relief on the investment front, allowing or encouraging more foreign investment to come in. With all this, the strengthening of the economy, both in terms of competitiveness, greater resilience, and of course increasing the consumption within the countries, are going to stand us in good stead against the global headwinds that one is facing. That's right, and I particularly liked how Professor Agarwal, the finance minister, brought in the common man. She expressed gratitude to the Indians for, being part of this journey. We've had setbacks, back-to-back setbacks, I should put it like that, after the COVID pandemic in terms of global supply chain disruptions. Then there are conflicts that have broken out, and then to add to that have been the tariffs. But the growth, India's growth story has stood out. But she's tried to connect it to the common man. She put it out quite beautifully that this is the first budget that was prepared in Kartavya Bhavan, and she's weaved the entire budget around the three Kartavyas. So I think in terms of listing out the three Kartavyas, the first one is accelerating, sustaining economic growth by enhancing competitiveness, building resilience to the volatile global dynamics. How do you think this budget takes it one step further to build greater resilience, to perhaps keep us in same question that I asked Mr. Thegna, because these headwinds are going to perhaps expand in nature in the coming times, and keeping the volatility of these threats in mind, we need to ensure that we are on the right path and reflects in India's growth story. No, I think the growth trajectory which India has witnessed, clearly visible in the economic survey. The international agencies, whether it is IMF, World Bank, OECD or any other agency,
ADB, has been talking about the growth story, appreciating the growth story, the reform process which the government adopted. Not only the fact that they only come at the budget timing like she has presented now or previously, but even during the year when the GST reform was introduced and Diwali bumper was given to the people at large by reducing GST to 2 frameworks, is a clear-cut instance and stand where they're saying it has a human face. Now, we have had budgets in the past face where the industry has been the face, the SME has been the face, the youth has been the face. This time there is a human face meaning that is the all categories, people at the lowest level, the middle level, everybody, they have been looked upon. You see, waiver of customs on critical disease, drug disease and all. Similarly, in the GST reform when they were introduced in September, they was completely done away with about large number of drugs. GST was done away from them. Large number, about 98% of items were removed from the GST framework, from consumer goods. So the fact that the government is looking at the Aam Aadmi, the Janta, the people of this country, to make it proud of what we are, I think, to introduce that growth. And given the fact that we have recently signed the EU trade agreement and other FTAs which have been signed in the last year or two, and further some in the future soon, they require a requisite kind of an infrastructure, a motivated human capital which is there to take that charge. Even if you see the first time a FTA agreement talks about labor mobility, research, even in this particular budget she mentioned at multiple stages to actually introduce research and development. So investments were linked with research and development, whether it was tourism, whether it was hospitality, whether it was education. So it was not only that I'm giving money for this purpose, but it was that you need to have research. Who will do research and development? It is not going to be machines or AI. It is going to be people who are going to function, scholars, researchers, and will be involved in getting some of these up. And that's where the human face is visible. And this overshadows. And last 2 years, we have seen turbulences, whether it is Trump, whether it is India-Pakistan war, whether it is other wars which are happening, supply chain disruptions which have happened, a lot of things have happened. We have brought our old gold back into this country. Now, these are some steps which have clearly shown the resilience of this country against any kind of turbulence which may happen. Even within the country, a turbulence like India-Pakistan was a scary fact. We had recently, after a long number of years, a small kind of a bomb blast which happened, not out of the blue, but not on as an attempt which could be controlled. Now, these clearly have shown that there no economic disruptions will happen. People will keep growing, India will keep growing and keep contributing to the growth. बिल्कुल अमन जी, और इसीलिए सरकार ने बजट के महत्व गिनाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में जाहिर तौर पर वो विकसित भारत का पूरा रोड मैप है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। जो महत्वपूर्ण पहलू हैं 3, वो आर्थिक विकास को गति देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास, जो पहले दिन से सरकार का एक मूल मंत्र रहा है। किस तरह से आम आदमी को दे किया जाएगा। साहजी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तरह से विकसित भारत का लक्ष्य है और सरकार ने अपनी नीतियों को स्पष्ट किया है इन्हें 3 कर्तव्यों के जरिए कि क्या 3 कर्तव्य हैं सरकार के, जो आगे समय है विकसित भारत का, उसको लेकर सरकार काम करेगी। नीतिगत रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा सरकार ने दिया है, गांव गरीब किसान के लिए सरकार ने पैसा दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन ये जो 3 कर्तव्य हैं ये क्या संदेश देते हैं? ये जो सरकार का, आपने सही कहा, शुरू से सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेके ये सरकार आगे बढ़ी है और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है, जिसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। जो सोशल सिक्योरिटी का इकोसिस्टम है पिछले 10-12 साल में, जो ये मैं जैसे बोला, ये इट शुड बी सीन इन कंटिन्यूटी। एक के बाद एक नए पॉलिसीज़ लाए गए, हर तबके की जैसे फ़ायदा हो, गांव, किसान, महिलाएं, युवा, आप किसी को भी ले लीजिए, उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात है, उसके लिए जो एलोकेशन है, इंक्लूडिंग लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, विच बिकेम थोड़ा वो मुद्दा सामने आया कोविड पैंडेमिक के बाद। तो ये सारे को लेके जो पॉलिसी इकोसिस्टम बना है, उसी का कंटिन्यूटी में इसमें देख रहा हूँ और ये बजट उसी नैरेटिव को और भी स्ट्रेंथन करता हुआ आगे बढ़े हैं। एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, हमारा मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या सुविधा है, उनका रोजगार का है, उनका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का है, उनका सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ने का जो सवाल है, अभी क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, कई तरह की बात इस बजट में किया गया है। वो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल के साथ गिना जा सकता है। और जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, हम साल दर साल अगर यही इकोनॉमिक
इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो वो लक्ष्य भी हमारे लिए आसान होगा. While details of the announcements are expected to come in, and probably then we can discuss it further in the coming days, but one statement that the finance minister beginning was that budget 2026 is Yuva Shakti driven, and then she's laid specific focus. I recall in the previous budget she had said there are 4 pillars to the budget, which included Yuva, farmers, women. Specifically used the word Yuva Shakti. Listening to the finance minister's speech, what is it that you think particularly caters to our large youth population? Today we are the youngest population. We have the world's largest youth in the world. So to cater to their aspirations, to cater to their employment needs, what is it that you think stands out in the budget? Actually, this budget generates a lot of hope, both in terms of the skilling requirements. As Finance Minister rightly pointed out, skilling requirements are at various levels. At the primary level, then you have the high-tech side of it, but also developing the labor-intensive sectors. You are supporting the labor-intensive sectors. You are supporting exports from the labor-intensive sectors, even in a situation of global uncertainty. And then you have the industrial sector growth being prioritized at different levels, including strengthening the service sector. So it requires skill development at multiple levels, and Finance Minister has talked about it, including setting up university townships, setting up skill centers, strengthening mental health support systems, strengthening the safety of women and girls so that they can participate in the labor force. So definitely this is something that is going to take care of the unmet needs still that are there in the youth population. That's right. Let me bring in Mr. Riaz Thingna once again into the discussion, understand his perspective on what stands out in terms of the taxation announcements that the Finance Minister made. Budget gave the common man a lot of reason to cheer because there was exemption up to 12 lakh per annum. But this time, of course, the announcement to that regard has not been mentioned by the Finance Minister specifically. We'll look at the part B of the Finance Minister's speech in greater detail as we get the document. But Mr. Thingna, what is it that stood out in terms of the taxation, something that we are not understanding at the moment, but which holds immense significance in terms of putting us on a higher growth trajectory, but also in terms of keeping the people happy and taking care of their needs? See, last year's budget had already made a lot of changes in terms of tax rates, given a lot of reliefs on taxation, and I don't think we expected any further changes in tax rates. What was required was the continued push towards rationalization, simplification, and creating a level of certainty. I think as far as rationalization and simplification goes, the announcement that the new Income Tax Act will be implemented with effect from 1st April 26, though there had been recent rumors of them an extension, that helps a lot because the new Income Tax Act is a big measure towards simplification of laws. I think that has been done. The second part, and that is very, very important, you trust towards decriminalization and the ad hoc levies of penalties. I think there's been a lot of clarity being provided. There'll be a clarity that there will be no prosecution, no criminal action in terms of wherever there are cases of defaults which are fiscal in nature rather than intent malified criminal acts. So I think that is the second part which is helping. The third is that some of the provisions are really helping the common man, the lowest level. There's a continuous problem for withholding tax. I think the clarity of automated withholding tax certificates at the lower level goes a long way. I think that has been very important. And by and large, the continuation of this reform engine towards rationalization, simplification, decriminalization continues unabated, and that gives a lot of hope and faith to the investor in the market.
जी टीना, अगर बात आम आदमी की हम करें, आम लोगों की बात करें, तो स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है और इस बार के बजट में भी देखने को मिल रहा है कि कैंसर और डायबिटीज़ की दवाओं के मामले में कि दवा सस्ती लोगों को मिले, इसको लेकर भी सरकार ने एक बड़ा प्लान बजट में रखा है। कैंसर और डायबिटीज़ की दवाओं के मामले में भारत आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर 10,000 करोड़ रुपए का प्लान सरकार ने रखा है। आत्मनिर्भर दवाइयों के मामले में भारत बने, बीमारियों से लड़ना भी है भारत को, और भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का भी लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे देश में। जाहिर तौर पे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, सरकार उसको भी बजट के माध्यम से बढ़ावा देना चाहती है। अमन जी, अगर बात स्वास्थ्य सेक्टर की मैं करूं, हेल्थ सेक्टर की जाए, तो उसको आप कैसे देखते हैं इस बजट के माध्यम से, क्योंकि कैंसर और डायबिटीज एक बड़ी चुनौती है देश के सामने। के बाद से सरकार ने दुनिया को दिखाया है कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, जनता है, उसको किस तरीके से बिना डिस्टर्बेंस किए, बिना कियोस क्रिएट किए, किस तरीके से स्मूथली कोविड का नियंत्रण किया, लगाया, सब जगह लोगों को लगाया, पहुंचाया उन तक। और उसके बाद से हिंदुस्तान को WHO भी और भी एजेंसीज भी अप्रिशिएट कर रही हैं। पर इस बार बजट में उन्होंने सिर्फ ड्रग्स, जो जबकि GST में भी उन्होंने रिलीफ दिया था, इंश्योरेंस में भी जब आप लेना चाहते हैं उस पर प्रीमियम ख़त्म कर दिया इस बार GST में। इस बार और एक तो 17 ड्रग्स स्पेसिफिकली जो कैंसर की इंपोर्ट की जाती थी ओवरसीज से, उसके अलावा कुछ और कैंसर की जो मेडिकेशन इंपोर्ट की जाती हैं, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है कस्टम ड्यूटीज हटाई हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है योगा को भी देखते हुए, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री का योगदान दिया कि उन्होंने UN तक लेके गए, उससे विश्व में इसकी फैलाव हुई है आयुर्वेद और योगा की, उसको छोड़ते हुए उन्होंने कहा 3 नई इंस्टीट्यूशंस, 2 जो हैं टेस्टिंग एजेंसीज क्रिएट की जाएंगी, स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम जिसमें 1.5 लाख लोगों को हेल्थ केयर के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, सेटअप किया जाएगा, AI बेस्ड ट्रेनिंग की बात करी, मेडिकल टूरिज्म की बात करी, बिकॉज पिछले 10-12 सालों में हमने देखा काफ़ी लोग विश्व से, अलग अलग देशों से, अमीर देशों से हिंदुस्तान में आते हैं, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर अफोर्डेबल भी है, साथ में अच्छी भी हेल्थ केयर मिल पाती है, अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी, तो उन हेल्थ केयर से तो उनको बढ़ावा देने के लिए 5 रीजन्स को मेडिकल हब बनाने की बात करी। जहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात करी, एजुकेशन की बात करी, उन्होंने उसमें भी कहा कि वहाँ पे भी हम हेल्थ केयर सेटअप्स क्रिएट करेंगे। मतलब हर एक चीज़ को ना जैसे बुन के बनाते हैं चीज़ों के अंदर, जैसे कोई चीज़ बना के एक चीज़ बनाई जाती है, इस तरीके से एक आम आदमी की हेल्थ केयर, आयुष्मान की बात करी, उसके अंदर उन्होंने प्रोग्राम के अंदर कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, वहाँ पे टैक्स हॉलीडेज की बात की, रिलीफ्स देने की बात करी। इस तरीके से जो सारे सिस्टम्स को देखते हुए एक हेल्थ को बढ़ावा, और जो कोविड के बाद जैसे मैंने कहा काफ़ी सरकार का मुहिम रहा है, तो हेल्थ केयर और एजुकेशन की प्रति इन्होंने बहुत अभी काम किया, और अब और काम देखने को, रोड मैप देखने को मिला है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, इवन जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से के अंदर उसके, बिकॉज आज देखें तो हेल्थ केयर, जैसे उन्होंने डेटा सेंटर्स की बात करी, जहाँ AI की बात करी कि उनको रिलीफ दिया जाएगा टैक्स के अंदर। अब डेटा सेंटर सिर्फ ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या अकाउंटिंग का डेटा रखने के लिए नहीं होते हैं, हेल्थ केयर डेटा भी अब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपके मेडिकल हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिकॉर्ड होते हैं। अमेरिका से पहले हिंदुस्तान में करते थे, अब हिंदुस्तान की भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उनको भी देखना है कि कहाँ पे क्या हो रही है, कोई महामारी हो रही है, कोई चीज़ आती है एकदम से, जैसे अभी भी कोई वायरस आया था, उसको कंट्रोल कर लिया भारत सरकार ने 1 दिन 2 दिन के अंदर। तो ये चीज़ें देखना हेल्थ केयर सिस्टम की मजबूती दिखाता है, और सरकार का कंटिन्यूड कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बनाएं, सिर्फ एक अमीर या मिडिल क्लास नहीं, एक गरीब तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव मेडिकेयर, उसको भी मिल सके। जी टीना, इस बार के बजट में बायो फार्मा सरकार की प्राथमिकता में ऊपर रहा है, केंद्र में रहा है। साहब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि सरकार भारत को बायो फार्मा के क्षेत्र में दुनिया का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है, क्या संभावना है और क्यों आवश्यकता है? देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत दुनिया में भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया भर में आगे हैं, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत हाई है। और उसके साथ साथ जैसे कोविड के टाइम हमने देखा कि जो भारत का वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी दुनिया भर में उसका सराहना हुई। डेवलपिंग कंट्रीज़ के तहत हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और रिसर्च का कैपेसिटी है वो कई देशों से आगे है। दुनिया भर में वैक्सीन की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसमें भी हम आगे रहते हैं, जो सप्लाई होते हैं लो कॉस्ट वैक्सीन सप्लाई में हम आगे रहते हैं। और ये
जो ट्रेडिशनली इंडिया का ये स्ट्रेंथ रहा है इस एरिया में, बायोफार्मा एंड फार्मास्यूटिकल्स, इस बार जो एडिशनल प्रोविजन हमने बजट में देखा, इसका क्लियर एक रोड मैप है। ये जो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी जो अभी जो इंडिया बहुत ज़्यादा उससे जूझ रहे हैं, तो उसको रिस्पांस के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस था एपीआईज के ऊपर, उसको रिड्यूस करने का काम हुआ है। एडिशनली रिसर्च इकोसिस्टम को भी सरकार ने इस बजट में बड़ा सपोर्ट किया है। जैसे नाइपर्स हैं हमारे, तो नाइपर्स अभी 3 और खोले जाएंगे, तो पूरे देश में 10 नाइपर्स आ जाएंगे। तो साइंटिस्ट के लिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, और एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायरैक है, पहले से बहुत स्कीम्स हैं इस एरिया में। तो हम मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी था, बहुत आगे के लिए ये हमारी जो मेडिकल सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा और सिटीजन को सपोर्ट मिलेगा। जी, Since you spoke about support, Professor Vishandas, we've already spoken about targeted efforts for increasing farmers' income. But there is one thing that sounds quite interesting, which is Bharat Vistar, that the Finance Minister announced. And Vistar here stands for Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources. Now, of course, the proposal to launch this means that it envisages a multilingual AI tool. So once again, in technology, making it beneficial to all, which includes women in STEM, which includes farmers in the fields. You would recall the Finance Minister started by saying that we believe in adoption of AI and percolating benefits to all. And farmers in the fields is the first thing that she mentioned. So tell us about how this scheme is going to enhance farm productivity and it's going to enable better decisions for the farmers. Professor, please unmute yourself. Yeah, sorry. In the AI, the underlying philosophy of this is, because if we apply AI, it will replace the human being, because the productivity in the agriculture is about 29% of non-agriculture. So there is something missing here, and the cost of capital is going to be small compared to the cost of human labor, and therefore it is on economic principle, it is prudent to go for AI and the farm mechanization and things like that. So it is a step in the right direction to go on whole hog AI and other things and technology in the agriculture. 46.5% of the entire country's workforce, and then the agriculture GDP is about 15%. So it's not sustainable if we continue for the business as usual. So government has thought out of box to go AI in agriculture in particularly, and then extend it. And for instance, in this country, 86% of the small and marginal farmer land is fragmented, and it's very difficult to have the big tractor and everything in the agriculture, which is unsustainable. Large number of studies have shown. So AI is the answer. That is number one. Second point is the government has rightly recognized that in the coconut, just an example, there are 10 million coconuts. The government has announced that old trees which has to be replaced by the new sapling, and that for that, if it is to be done on a scale, then AI is a answer, because it increases the productivity. Our export competitiveness comes from the low cost, and low cost can be further reduced by application of the AI, which is an answer. And then we have to take the youth of this country to a better skills and all those things, so that agriculture is sustainable. And everything, say COVID is an example, when our economy, the negative growth in all sectors except agriculture, so is resilient and it has a future, and nothing, because it's a strategic also.
if we are not food secure country, we could not have become the nuclear country. That's my belief. And then it is just an example. So we cannot depend on very strategic things like agriculture on other country. Therefore, there is a need independent, self-reliant in agriculture particularly, and any matter which is strategic in nature. If we depend on other country for strategic key supply, then it is a coercive months or 1 year. How the other country can be very, very strategic and cohesively they will extend a pound of long country. That's right. So consistent trust that we are seeing from the finance minister in her consecutive budgets on strengthening various sectors. Another important announcement has been made by her on comprehensively reviewing the financial sector, aligning it with India's next phase of growth. Professor Agarwal, a high-level committee on banking for Viksit Bharat to align the financial sector with India's next phase of growth. How significant and how reformative is this move, in line with the reformative measures that we've already seen, which have been quite beneficial for the health of this sector? Now, I'm very happy you raised this point because it's very critical, although it looks very small and she has only referred to it as a committee framework. But you see, banking is something which makes movement of money, whether you talk of healthcare or education or industry or any activity, even this activity of news broadcasting, everything involves money. And if there is not an efficient way of transfer of this money which takes place in an efficient manner to the lowest possible cost, it is not good. I think you will be knowing that we introduced the digital rupee as a pilot study about 4 years back, and we are the first country in the world to introduce a digital currency, a central bank digital currency to be introduced on the platform. Now, putting that in place, that we are a cash-based economic system into a digital base, while we have already moved into a UPI framework and others, and the RuPay is taking over the world against the MasterCard and Visa, it is important that an appropriate banking structure and strategy is in place to take the new challenges, the new world challenges, including AI and cyber security framework, to be taken into account, so that the robust framework which we are talking about, the kind of agreements we are talking about, international movement of funds, labor mobility, people wanting to transfer funds from across the globe, does not take place through informal channel like the Hawala, but through formal channels which the government develops. If there are appropriate means and mechanisms to do it, people will prefer to do it through the official channels than the unofficial channels which have been used in the past. Not forgetting that despite the Jan Dhan account creation, the demonetization, we still have a parallel economy which is as strong as a normal economy. And this step will help reduce that further if they are able to reduce the banking cost and smoothen the efforts which are there. So in my opinion, this is what greases the whole system. And the budget, when we talk about, is nothing else but all about money. Whether it is to one sector or the other. And so that money movement is critical. The government has done direct transfers to people, whether it is farmers, to women and others, but I think still a streamlined processing which is accountable, transparent and fungible is what this committee will look into, so that we can move into that Viksit Bharat framework, that $5 trillion economy mark by this 2027 itself. जी बिल्कुल, अगर टीना बात की जाए इस बजट की, तो इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र को भी सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। निर्मला सीतारमण जी ने इस सेक्टर में की हैं। जाहिर तौर पे आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, इस मुद्दे के साथ सरकार ने सोलर एनर्जी और परमाणु ऊर्जा को केंद्र में रखते हुए कैसे दूसरे जो ऊर्जा के साधन हैं, कैसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए की दृष्टि से साजी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इस सेक्टर को, क्योंकि एक मेजर सेक्टर है इस बार के बजट में, ये आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो ऊर्जा का सेक्टर है, आप देखेंगे कि भारत का जो ये एक मैसिव स्केल पे हो रहा है, चाहे वो सोलर है, विंड एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी आपने जैसे बताया। और अपने टैक्स प्रपोजल के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा दोहराया कि जो BCD है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, इक्विपमेंट्स पे, पार्ट्स
पे, तो उस पे जो लगातार जो हमारा ड्यूटी एग्जाम्पशन है उसको उन्होंने बरकरार रखा, कई मायनों में उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स भी लाए। तो ये ऊर्जा सेक्टर की जो कम्पिटिटिवनेस है, डोमेस्टिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सबको बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ एक अहम घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में की है, वो है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज का। आपको पता होगा कि ये एक फ्रंटियर डोमेन है जिसमें दुनिया भर में एक साथ काम चल रहा है। तो ऐसा एक डोमेन जिसमें हम पीछे हैं, बोल नहीं सकते, तो हमें पैरेलल एफर्ट की ज़रूरत है। इंडिया अगर इसको टैप कर पाए सही मायने पे तो इंडिया आगे रहेगा। ये हमारे जो हम जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की बात करते हैं, हार्ड टू एबेट सेक्टर्स में जो एनर्जी यूज़ होता है उसको एमिशन रैशनलाइजेशन की जो बात करते हैं उसमें कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ की अहम भूमिका है। और उसके लिए 20,000 करोड़ की जो आंकड़ा सामने आई है, ये एक बहुत ही बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, मैं मानूंगा। जी बिल्कुल। अमन जी, अगर बात बैटरी ऊर्जा भंडारण की जाए, क्योंकि जो बैटरी ऊर्जा भंडारण का जिस तरह से एक परिवर्तन के दौर से मैं कहूँगा ऊर्जा के क्षेत्र भारत गुजर रहा है, और नए नए प्रयोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात की जाए या दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, मेरे विचार में भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी पिछले 4-5 साल से नज़र आ रही है, बजट के अंदर भी और बजट के बावजूद भी, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को महत्व दी जा रही है, बैटरी फ्रेमवर्क को, ईवी व्हीकल्स को महत्वता दी जा रही है, टैक्स रिलीफ्स भी दिए जा रहे हैं। और अब जैसे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर बाहर की जो गाड़ियां हैं उनको भी अलाउ किया गया है। ईवी के अंदर 1 लाख तक जो गाड़ियां हैं वो यूरोपियन देशों से हिंदुस्तान में आ सकेंगे। उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस ख़त्म से कर दिए हैं बिल्कुल। कहाँ जहाँ 120-300-200% होता था, वहाँ पे 30-40% के ऊपर उसको लेके आ रहे हैं। तो मेरे विचार में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ऊर्जा युक्त कर सके। बिकॉज अगर आजकल हर एक चीज़ ऊर्जा, हमें काम करना है, लैपटॉप चाहिए, हमें कोई जहाँ ट्रांसपोर्टेशन लेना है, जिस तरीके से विस्तार हुआ है ईवी व्हीकल्स का हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर, इतना किसी भी देश के अंदर विश्व में नहीं देखने को मिला है। और ये जो एक लोकप्रियता पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की प्रति आ रही है, उसमें बैटरीज की रिक्वायरमेंट, और सिर्फ लिथियम बैटरीज नहीं और भी, जबकि हमारे पास लिथियम का रिसोर्स अभी 1.5 साल पहले मिला है, उसको एनर्जी राइज करने में करीबन 1-1.5 साल और लगेगा। बट लिथियम के अलावा भी और जो सोर्सेज कुछ निकल के आ रहे हैं, नए सोर्सेज निकल के आ रहे हैं जो रिन्यूएबल टाइप हैं, जहां बैटरीज यूज़ हो सकती हैं, उस तरीके की बैटरीज क्रिएट करके इको सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। Capitalize that momentum. Since you spoke about the semiconductors, let me put across the numbers in terms of the allocations. 40,000 crore rupees has been given to the semiconductor mission. India's Semiconductor Mission 2.0 will focus on the industry-led research, training centers for the semiconductors, and there will be specific measures to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. So we will get into specifications of these allocations with sector-specific guests who will also be joining us through the day today. But since we have guests with whom we are discussing some of the important announcements that the Finance Minister has made, and we are trying to cover different sectors, I'll try and pick out one more announcement that the Finance Minister made about the implementation of the new income forms, which will come into effect from the 1st of April 2026. Mr. Riaz Thigna, let me bring you in. How transformative is the new income tax compared to the previous overhauls, if you see in this sector? How transformational is this going to be? How should the individual taxpayers, the small businesses begin to prepare once it comes into effect? Okay, the new Income Tax Act is not new in terms of change in law itself. Basically, the thrust of the new income tax is simplification, making the language a lot simpler and therefore easier to understand. So that is the main thrust of the new Income Tax Act. And along with that, the entire process of simplification continues, and therefore we have simplified forms, we have easier compliance methodologies. So these are the things that are really changing. But what is the impact of all this? On one hand, I like to correlate it by what you were talking about, the concept of focus being on youth. Now, with youth, an important component is employment.
You create a lot of employment by investment in various sectors, whether it is biopharma, whether it is electronic components, whether it is rare earth, all that you do. But on the other hand, you are doing a lot for the MSMEs, which create a lot of employment too. And when you do this for MSMEs, you have to make it easier for the MSMEs to comply with all the regulations and all the requirements. What does the budget do? A, forms. B, it also encourages institutions like the Institute of Chartered Accountants and the Institute of Company Secretaries to create a Mitra scheme to help the MSMEs and the small taxpayers to directly comply with the provisions of law. And I think this entire thing together kind of fits into a great which supports each other. You have the economic aims, and then the tax laws are going and supporting the implementation or achievement of those aims. जी बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए तो जाहिर तौर पे सरकार ने जल मार्ग को भी फोकस में रखा है इस बजट में कि निर्मला सीतारमण जी ने, और रेल उसको भी रेल कॉरिडोर बनाने की बात भी है, और साथ ही जल मार्ग की हिस्सेदारी जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लक्ष्य 2047 है विकसित भारत, 6% से लेकर कैसे 12% उसको किया जाए, इसका एक है इस बजट में। ये जो दो सेक्टर हैं, खासतौर से जल मार्ग की बात की जाए अमन जी, या रेल कॉरिडोर की, इन दोनों सेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से, कितने महत्वपूर्ण है ये दोनों सेक्टर? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 20 नए वाटरवे क्रिएट करने की बात की गई है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की गई है, 5,000 करोड़ पर स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ 5 साल के ऊपर हर एक स्टेट को दिया जा रहा है ताकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। ये सब बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बाहर की कॉरपोरेशंस को इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए, हिंदुस्तान मेक इन इंडिया को विकसित बनाने के लिए भारत, ये सब जो बहुत ज़रूरी है। ई बस फ्रेमवर्क 4,000 के करीब ई बसेज नॉर्थ ईस्ट को दी जा रही हैं। इको टूरिज़्म की वहाँ पे बात की जा रही है। अगर टूरिज़्म कैसे होगा, एक आदमी को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगेंगे, तो नॉर्मली जो टूरिस्ट आते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आते हैं, तो वो कैसे उस टूरिज़्म को बेनिफिट कर पाएंगे? चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे मेडिकल के बेसिस के हो, चाहे एजुकेशन के बेसिस पे हम टूरिज़्म की बात कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है और वाटरवेज जो है, इस सरकार ने पहले कभी हमने इतना तवज्जो नहीं दिया। बहुत सालों पहले वाटरवेज को यूज़ किया जाता था, जब इंसानियत भी शुरू हुई तब भी किया जाता था, बट अब वाटरवेज पिछले काफ़ी सालों में शांत। इस सरकार ने पिछले 4-5 सालों में वाटरवेज को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कार्गो के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको किया और क्लीन मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ करने की बात की है। ये नहीं कि हम उसको पोल्यूट करके या पोल्यूशन बढ़ा के उसमें किया जाए। तो मेरे विचार में ये एक बैकबोन है किसी भी देश की आगे प्रगति बढ़ाने के लिए तेज। Certainly. So important announcements, particularly focusing on how to boost productivity, but most importantly, sustaining that growth momentum and focusing more on inclusive growth. Kartavyas outlined by the Finance Minister in her 9th consecutive budget. She's created history today. And most importantly, the fact that it's a Sunday on which the budget has been presented. So a rare history of sorts in India's fiscal landmark as well. But for now, we'll have to wrap up this conversation. We'll slip into a quick break, after which we'll go across to the proceedings of the upper house. Thank you, Professor Agarwal, Professor Saha and Chandas, Mr. Riaz Thingna for joining in with your thoughts on the importance of this budget. We'll continue with our discussions on sector-specific allocations through the day today. So stay tuned. We are slipping into a very quick break. What is public debt? Difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into the internal debt, money borrowed within the country, and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills,
market stabilization scheme, ways and means advance, and securities against small savings. What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP, the overall health of the economy. What is fiscal deficit? When government's revenues from various sources fall short of its entire expenditure, it has to borrow money to meet the shortfall. The excess of expenditure over receipts is called fiscal deficit. Higher fiscal deficit may result in higher rate of inflation.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, the Union Budget 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay, with your permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 26-20. The Fiscal Policy Statements 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission again, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement. Papers to be laid on the table, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay on the table under 81 of the Constitution a copy each in Hindi and English of the following papers. A report of the 16th Finance Commission for the years 2026 to 31. B, explanation on the action taken on the recommendations contained in the report of the 16th Finance Commission. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd February 2026. What is public debt? The difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into the internal debt and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills, market stabilization scheme, ways and bonds, and securities against small savings. निर्मला सीतारमन ने अपना बजट पेश कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश भल्ला जी एसोचैम से। सर, कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? क्या आपकी उम्मीदें थी सेक्टर की बजट को लेकर, और किस तरह से बजट जो पेश हुआ है आने वाले सालों को लेकर किस तरह से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा? एक तो
इस बार जो बजट था उससे सबसे पहले बिफोर में एक लाइन में मैं कहूँगा इट इज एक्सेलेंट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो जिस लाइन में मोदी जी कह रहे थे 2047 में विकसित भारत है उसकी तरफ एक डायरेक्शन में बजट है। इससे पहले जब अब टैक्स की इसकी बात करें, बजट की बात करें, तो जो उम्मीदें थी बजट से उम्मीदें इस बार दो टैक्सेशन की पहले बात आती है कि इनकम टैक्स और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आप दोनों टैक्सों में ऑलरेडी रिफॉर्म्स आ चुके थे। नया इनकम टैक्स अभी आया है और जो जीएसटी में रिफॉर्म्स अभी आए हैं, इसलिए तक कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। पर इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स में एक अच्छी चीज आई है जनरल पब्लिक के लिए कि आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे जो हमें क्लेम मिलता था वो क्लेम पे टैक्स जीरो कर दिया। किसी का एक्सीडेंट था वो जीरो करता, और काफी टीडीएस और टीसीएस में रेट कम किए हैं जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, पर कैश फ्लो इफेक्ट आएगा, पर टैक्स पे इफेक्ट नहीं आना। एज पर इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न, इनडायरेक्ट टैक्स में इन्होंने काफी कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है, और इम्पोर्ट ड्यूटी कम उन चीज़ों पे की है जो कि एसेंशियल्स हैं, जैसे कैंसर की दवाई हैं और बाकी चीज़ों पे हैं, और मशीनरी पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है। दैट इज गुड साइन, दैट इज एज पर एज ओवरऑल एलोकेशन ऑफ बजट। नाउ क्वेश्चन कम्स एलोकेशन ऑफ बजट इज कंसर्न। इस बार जो कंसर्न था बेसिकली वो था ग्रोथ, और ग्रोथ पे इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि अगर ग्रोथ की फोकस करें एमएसएमई को 10,000 करोड़ का बजट दिया है, और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हर एक सेक्टर को टच किया है। बट वो जो फंड थे जिस हिसाब से इन्होंने काम किया उसको वेल मैनेज किया, तो आई विल से इट्स अ फैंटास्टिक बजट प्रेजेंटेड बाय द। बाकी इसकी डिटेल जब भी फ्यूचर में और देखेंगे तो आई विल कम बैक। अगर हम आपने कहा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है वो एक रोड मैप की तरह है, तो आपका क्या लगता है कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत थी और उस पर दिया भी गया है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है जो आने वाले 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है? अगर मैं विकसित भारत किसी भी देश के विकास जो है इंडस्ट्री के बगैर नहीं हो सकती। इंडिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर में बाद में टच करता हूँ, बट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें उसका जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई, और एमएसएमई में इन्होंने काफ़ी फोकस किया है इस बार। उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए उसका फंड उसको आ जाए, और सेकेंडली जो उसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उनके लिए काफ़ी कुछ है इस बजट में। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, एग्रीकल्चर में जैसे नारियल के ऊपर इन्होंने अभी स्पेशल स्कीम्स लाई हैं, तो वो एग्रीकल्चर और अगर इंडस्ट्री में इट्स राइट अच्छा स्टेप है। जी, संसद टीवी को आपने समय दिया, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे राकेश भल्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बजट को अपना मार्ग देते हैं कि आने वाले विकसित भारत का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है उसको हासिल करने के लिए ये रोड मैप की तरह होगा। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। जी हाँ, स्टूडियो में आपका एक बार फिर से बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रिकॉर्ड 9वीं बार उन्होंने आम बजट पेश किया है। 3 विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी सहयोगी टीना झा भी हैं। Absolutely. Good afternoon, viewers, and welcome to all our guests. It's been a remarkable budget, especially because of the thrust that the finance minister put on the budget. She said it's not a continuity, but it's an effort to sustain India's growth momentum and perhaps put the country's economy on a higher growth trajectory. She said the focus is on boosting productivity, on an inclusive growth, which will take us closer to our vision of becoming a Viksit. जी हाँ, 3 विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव झा हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पर्सोल इंडिया के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार सिंह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर यशोवर्धन पाठक हैं, कमिश्नर जीएसटी और कस्टम बिहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक वर्चुअल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, आपका भी स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा संजीव जी, क्या इस पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एफटीए हुए हैं और हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए हो गया है, उसकी छाया कहीं नजर आ रही है कि निर्माण पर भी जोर है और निर्यात पर भी जोर है?
जी आई थिंक मैं कहूँगा कि जो 3 मेजर पिलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बजट के थ्रू देखना चाह रही है, पहला कि इंक्रीज कैपेसिटी सो दैट दे कैन काउंटर इम्पोर्ट challenges. The second part is the indispensability, means we make ourselves more dependent. People are more dependent on us. The world is more dependent on us. And I think the third is the strategic tie-ups. And within that strategic tie-up is FTA is one of the biggest achievement because it somehow also gives you edge on both imports and exports. So yes, I think it's a if this event would have happened after budget, it would have been a big highlight, but it happened before. But still, it's a very, very large, step, I think, and it was a lot of risk-free, both import and export, and give us a lot of balance of payment and, deficit will cover. Yeah. Absolutely. Thrust to increasing capex and reduction in fiscal deficit. That, in terms of the numbers, has been the big highlight. From where we started in 2014 to what the Modi government inherited to 2026-27, when we are talking about, it's been a continuity. So this budget, as experts have been pointing out since morning, cannot be seen in isolation. It's just one step closer to taking us closer to our roadmap to Viksit Bharat. Professor, what's on how do you look at this budget? It's a reform budget, it's a growth budget, or do you see it as a balance of all these factors which also incorporates sustainability? Yeah, it's a very good question, I would say. So if I would have to single line, it's all budget about, then I'll call it a Viksit Bharat budget. So Pradhan Mantri, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, point of the reform rally, which he has mentioned earlier also. I think this budget has given a significant movement for that, the same rally. If you look at all the sectors, look at the fiscal consolidation, fantastic. 4% the target, 4.5% the target which the FM made, it has been made, and fiscal consolidation has been there. Look at other areas, Ayurveda, health sector, a major, a major improvement has been there in that investment. Now, if you look at this thing, these are not merely the short-term goals. These are the long-term goals which will make India very stronger and which is very important for the Viksit Bharat 2047 goal. Having said that, the capex, of course, 12 lakh crore is a big number. We'll see a big boost in the data centers also, which I had mentioned in the budget. Plus, if I have to mention it in a single line, it talks about a macroeconomics picture, making it a healthier, but also at a micro level. So the Kartabya path, which has been mentioned, 3 Kartabya, I think the government has taken a very pinpointedly approach on that, and definitely is going to show the impact at the longer level to the Indian economy. यशोवर्धन जी, ये भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। मेडिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ ये एक माना जा रहा था कि जिस तरीके से बेरोजगारी थोड़ा सा कम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विस्तार लेता जा रहा है, उस पर और ज़्यादा जो है व्यय किया जाएगा, उसका आवंटन बढ़ाया जाएगा। उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। आपका क्या कहना है? See, I would say it's a very futuristic और एक विजनरी बजट है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है जिसमें हमारे ग्रोथ को भी और हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन का भी, दोनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। हम we are growing at 7.4% this year, and next year the targets are around 7%, 7.2%. So in a world which is geopolitically very unstable, things are every day different things are happening globally. This kind of growth momentum as a fastest growing economy, it's absolutely a very futuristic budget. जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म का सवाल है, मेडिकल टूरिज्म का इंडिया हैज़ एन अमेजिंग पोटेंशियल। इंडिया के पास जो डॉक्टर्स की टीम है, जो हम लोग जितनी नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो एवरी ईयर हमारे मेडिकल स्कूल से निकलते हैं, वो एक बहुत बड़ा। एंड बियॉन्ड दैट जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है इंडिया में, दैट ट्रीटमेंट कॉस्ट इज़ डेफिनेटली चीपर व्हेन यू कंपेयर दैट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो डेफिनेटली एक उस एरिया में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को इस बजट में समझा गया है। हमारे केपिक्स एक्सपेंडिचर को 10% से ऊपर बढ़ाया गया है। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स लाइक रेलवे में हाई स्पीड कॉरिडोर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन द EV बैटरीज एंड अदर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को भी फोकस किया गया है। और जो एक लॉन्ग टर्म हमारा टारगेट है कि 2047 तक इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है
उसको उस टारगेट्स को हम मीट आउट कर रहे हैं एंड वी हैव टू अप्रिशिएट दैट टारगेट को मीट आउट कर रहे हैं ये डिस्पाइट जो हम लोगों ने टैक्स में इतने बड़े कट्स लास्ट ईयर किए उसके बावजूद है। There were big reforms in income tax में लास्ट ईयर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने मेजर स्लैब्स को इंक्रीज़ किया। जीएसटी में हमारे नवरात्र के आसपास मेजर चेंजेस हुए। इन सब के बावजूद जो कंजम्पशन बढ़ा है और हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम आगे भी ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही सस्टेन करेगी एंड as all my panelists we are on the consensus that it's a budget where the growth is maintained futuristic with a target that India will achieve a Viksit Bharat goal by 2047. In fact, I recall, Pratibim, just ahead of the start of the budget session, the Prime Minister had said that India is on board the Reform Express. That term found mention even in the Finance Minister's speech. In many ways, this budget has been historic for the fact that this was Finance Minister Nirmala Sitharaman's 9th consecutive budget. She surpassed many finance ministers in doing so. But most importantly, all of this has happened under one leadership. That's also something that makes her budget presentation stand out. But most importantly, given the fact that there are global uncertainties, so the global geoeconomic landscape is currently in turmoil, where India is an oasis of macroeconomic stability. You would recall the Chief Economic Advisor having used this term specifically in terms of India's growth. So, Mr. Chai, I'll bring back the discussion to that Reform Express in line with what the Prime Minister said. साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। अभी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे संजीव जी, इसमें हम देख रहे हैं कि रेलवे पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना अपने आप में क्या एक बड़ा बदलाव? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मतलब माइलस्टोन है इंडिया के लिए। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी को देखें, दे हैव ग्रोन ओनली वंस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रेडी। सो आई थिंक अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, आप देखेंगे चाहे रेलवे कॉरिडोर्स को देखें, चाहे आप नेशनल हाईवेज को देखें, चाहे आप नंबर ऑफ एयर, लास्ट 4-5 years देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ it is visible, the impact of these infrastructure facilities visible in the output, the productivity and also the business generation, also even the ports development. So I think they are basically developing all possible modes of transport where it can boost the trade and manufacturing, and that's our focus basically, to make the industrial that new revolution, because that's where we have not been really doing so great. On the services side, yes, we have been doing great. I think now it has started showing up. So that's why the capex also, you can see one of the good things in the budget, I see that the revenue expenditure is lesser than the capital expenditure, and this is considered to be in economic terms as a very value added expenditure, which means the expenditure is of good nature. This clearly says that we are infrastructure focused, and all the new corridors which are announced today, some in south and some in north,
I think they are definitely going to add to the overall infrastructure boost and eventually the industry growth and the output growth and also the employment at the same time. Just to give a quick recap to our viewers, the proposed development of 7 high-speed rail corridors, which focuses on boosting connectivity and infrastructure. The key routes of these corridors include Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Bengaluru to Chennai. So different parts of the country, but connecting the trade points, and most importantly, these are areas which will see enhanced connectivity. Then there is plan to operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. So this will be done by 2031 is what the government aims at. Training institutes will then again be set up as regional institutes of excellence in waterway space. There will be a ship repair ecosystem catering waterways, which will be set in Varanasi and Patna. So alongside these connectivity projects, Professor, there is a proposal to set infrastructure risk guarantee fund. The finance minister said that she's of dedicated real estate investment trust as well to recycle the assets of central public sector enterprises. Break down this for our viewers to understand the significance and the importance of some of these announcements which cater to the infrastructure bit, which is different from connectivity and different from the infrastructure projects, but which will be a milestone in enabling businesses in these sectors? Right. I think that's a very good question. I would see that, if you look at the infrastructure point, in economics, macroeconomics, generally we have something called the multiplier effect. Government makes, it has an implication on the development of the other projects also. So this government has taken a very good stand on this thing by taking into incorporation some of the major developments for the risk guarantee scheme for the infrastructure projects. Having said that, the Yuva Shakti, the point which has been Yuva Shakti budget, the term which has been used for it is for the same only, because if you look at the infrastructure, which is the backbone for any economy, if you take into consideration, a lot has been investment made in this direction, because all the FTA, free trade agreement, if you talk about, which India has done with the foreign countries like European Union plus 8 other countries which we have made, 8 FTA which we have signed, this will need the backup. And for that backup team, for any company to invest, they need to have the risk-free environment for that. Basically, what we are trying to do is to look at the ecosystem, to make the ecosystem better so the investment can come in and that can augment in the export-oriented economy of the country. Second point which I would like to mention, that the capex which is generally done in the case of the road or the ports and others, like one of the data that the airports in India used to be 74, now we have currently 164 airport, 2024 data says that. So to have the risk-free environment, to have the mental free without any hazard for the investment, we needed to have, and I think the Honorable Finance Minister has taken a very good stand on that. डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्चुअली। डॉक्टर मनोज, काफ़ी बात हो चुकी है, थोड़ा सा लेट आप कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको विस्तार देने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर बात करें, मैंने शुरुआत वहाँ से की थी कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन के साथ FTA हुआ है, ब्रिटेन के साथ FTA हुआ है, जोर निर्माण के साथ साथ निर्यात, उसका असर नज़र आता है। MSME को चैंपियन के तौर पर आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा गया इस बजट के दौरान, और 10,000 करोड़ रुपए MSME ग्रोथ फंड जो है तय किया गया, कितना बड़ा बदलाव है। और प्रधानमंत्री जी ने पहले इस चीज को रेखांकित कर दिया था, इकोनॉमिक सर्वे के समय हम लोगों ने चर्चा भी किया था इस चीज को, कि MSME हमारे ग्रोथ का एक बड़ा आधार आगे बनता चला जाएगा। और जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA हुआ है, उसका मुख्य आधार हमारा MSME ही बनता है। लेकिन MSME अब मॉडर्नाइजेशन के साथ देखा जा रहा है। जो 10,000 रुपए का ग्रोथ फंड तैयार किया गया है पहली बार, तो मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इसके साथ कनेक्टिविटी भी जोड़ा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी जोड़ा जा रहा है, और जो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है उसको भी कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, जिसको एक मित्र, कारपोरेट मित्र के रूप में इसको रखा जा रहा है, कि कैसे हम इनके जो कई बार नॉलेज गैप रह जाता है, अवेयरनेस गैप रह जाता है, उसको रखा जाता है, और इसके साथ किसको पोषित कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट इस रूप में हो जाता है कि हम टियर 2, टियर 3 सिटीज को अब हम वहां पर शामिल कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट कारण है उसका स्पष्ट कारण इस रूप में आता है
क्योंकि आज के दिन अगर हम देखते हैं तो भारत का ग्रोथ इंजन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज बन रही हैं, यानी कि वो एक नया तरह का कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं टू द ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो खाली हम एमएसएमई तक अपने को न रखें, एमएसएमई की जो परिधि है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। पहला, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, इसका एडवांटेज क्या होगा, यहां से जो आउट माइग्रेशन होता था या आसपास की विसिनिटी से जो आउट माइग्रेशन होता था वो रुकेगा, लोकल टैलेंट वहां पर रुकेगा, प्लस उनको जो टैलेंट चाहिए होगा, जो अवेयरनेस चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, उसके लिए जो 5 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जा रही है जो इंडस्ट्रियल हब के इर्द गिर्द होंगे। एक और एडवांटेज यहां पर हमको एमएसएमई के रूप में दिखाई पड़ता है, 200 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थी वो कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए कमजोर पड़ गई थी या गायब हो गए थे। उन क्लस्टर्स के रिवाइवल से फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था वो और पोषित होगा। कि एमएसएमई को हम देखते हैं तो कई रूपों में हमको इस बजट में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी कुछ क्लस्टर्स इधर हैं, कुछ क्लस्टर उधर है बजट में, लेकिन एमएसएमई हर तरफ दिखाई पड़ता है। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कार का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, उसमें एमएसएमई जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है अब रिसर्चर्स के लिए, हम जैसे रिसर्चर लिए बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि हर जगह हमें एमएसएमई तलाशना होगा, क्योंकि बिना एमएसएमई के भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो आगे उस रूप में नहीं होगा। यूं समझिए, बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे जो गैप्स है वो कौन फिल करेगा। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतीक है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सख्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, प्रेषण से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए काम देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर
और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हर टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को
बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन, उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया बजट के बाद, और बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने सार बताया है बजट का। उसमें जिन चीज़ों पर फोकस किया गया, संजीव जी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपने आखिरी संबोधन में, जो संबोधन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा युवा शक्ति बजट है। अब युवा शक्ति को लेकर उन्होंने बताया कि स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर हमारा फोकस है। एक तरह से अगर हम देखें, समझें, तो जो एम्प्लॉयमेंट लिंक ग्रोथ की बात की जा रही है, स्किल बेस्ड हायरिंग पर जोर दिया जा रहा है। कैसे हम बजट के जरिए इसको समझें कि जो बजट है वो जॉब क्रिएशन को स्लोगन से निकालकर एग्जीक्यूशन की दिशा में लेकर जा रहा है? I think this is a very good. See, one of the most important struggle as a country we have is we have a huge youth population, which is around 26 to 30 crore, which counts to about 20% of our population. And I think the whole idea is that any country can grow and sustain the GDP growth we are looking at only if we are able to provide enough employment to these youth. So I think now the budget theme, we kind of create growth. So the growth is being addressed by many reforms, etc. What is important is to see that how growth will eventually convert into the employment. I think that's where the success will happen and sustainability will come. So I think in order to have more employment, I think all the reforms which have been announced even previously and even in this budget, for example, you look at the entire data center, which has been made tax free now for like for next 20 years. So it will attract a lot of investment in India. There is a GCC boom, where a lot of shared centers are being, increasing now. They were almost 1,700. They may go up to 2,500, adding to almost 6 lakh jobs. Then if you look at one of the themes in this budget is the tier 2, tier 3 cities. And I think we heard the professor on our panel that
what will happen is that today we are going to utilize the talent in these tier 2, tier 3. Already it has been identified by many companies, but now I think it has been very, very clear that instead of those people coming to the tier 1 cities, we will try and take employment to tier 2, tier 3, and this will hold them there and it will give them a lot of employment. And also all other reforms, for example, the health sector, the sports sector, the MSME. Now MSME is going to be one of the major employment creator, because MSME is almost 35 to 40% of our overall GDP and is the backbone. So I think all this put together, clearly there is a focus that we have to convert growth into employment, and for that we need to bring more business, more reforms, more simplicity to do business or ease of doing business, and also the skill development. We have to skill our people so that they can be absorbed in those reforms, in those growth, and eventually they both marry well with each other and we eventually get the outcome. So definitely employment and this Yuva Shakti is one of the most important theme and success factor for us in years to come. राकेश जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मदर ऑफ ऑल डील FTA जो हुआ, क्या उसको देखते हुए भी डिज़ाइन किया गया है इस बार का बजट, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी उस तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इस डील का लाभ भारत के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। जी सही कहा आपने। जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें देखिए इसमें कई बातें देखनी पड़ेगी। जो हमारा अभी जो अमेरिका के साथ अगर हम उसको देखें, जो टैरिफ वॉर हमारा चल, उससे भी कई तरीके से हमारा जो ये डील है उससे हमें निकलने में काफ़ी मदद करेगी। हम आर्थिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो हमारा जो निर्यात क्षेत्र है, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको भी बहुत एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है पता, तो इससे एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि युवा शक्ति बजट है। ऑफ कोर्स ये हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। भारत में एक युवाओं की जो प्रतिभा है ये हमें 2040 तक अवेलेबल है और भारत इसको पूरे अच्छी तरीके से नियोजित करके एक सही मार्गदर्शन में जाना चाहता है। उसके लिए ये जो डील है, मदर ऑफ ऑल डील है, ये बहुत ही मुझे लगता है क्रियान्वित रहेगा और बहुत ही लाभदायक रहेगा। दूसरी बात मैं जो जोड़ना चाहूँगा कि इस डील में जो लेदर सेक्टर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वो तो है ही। उसके अलावा जो ऑरेंज इकॉनमी की हमने बात की है, डेटा सेंटर्स की बात की है, ऑरेंज इकॉनमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आज युवाओं का जो इंटरेस्ट, जो झुकाव है, हम देखते हैं विजुअल इफेक्ट्स की तरफ, क्रिएटिव की तरफ इफेक्ट है और इसमें उनको काफ़ी बूम देगा, एक उड़ान देगा। जो प्रधानमंत्री जी ने इसके वर्ड यूज़ किए, उनको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, क्योंकि उसी ऊर्जा के साथ उसमें भी काम करेंगे। और जो हमने टैक्स हॉलीडे दिया है 2047 तक, जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो ऑरेंज इकॉनमी जो हमारा ऑरेंज इकॉनमी है, ये जो लेदर एक्सपोर्ट्स जो होंगी और जो डेटा सेंटर्स का जो बूम आएगा, इससे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे और भारत एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ निश्चित ही 2047 से इस कदम से बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। और यशोवर्धन जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, शुरुआत ही की उन्होंने कि फिस्कल डेफिसिट कम करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये दोनों फोकस रहा है बजट में भी और सरकार की प्राथमिकताओं में भी। कैसे समझे जो पूरे टैक्स को लेकर जितने रिफॉर्म्स की बातों का जिक्र किया जा रहा है, जो बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में एक तरह से मैं कहूँ क्वाइटली लेकिन इफेक्टिवली रोल कैसे निभाता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक मैंने सुना उनके संबोधन में, उन्होंने एक रिफॉर्म एक्सप्रेस करके कहा कि अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस के ऊपर देश रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह चल रहा है और 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है। डेफिनेटली उस लक्ष्य में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस और फिस्कल कंसोलिडेशन, हमारी जो मेन इकोनॉमिक के पैरामीटर्स हैं, उनको हमें पूरा करना है। और ये जो बजट है, ये बजट उसी ध्येय को लेके उस दिशा में आगे चल रहा है। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं इस बजट में जो हमें उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। जैसे आप क्लाउड सेंटर्स को देखें, जो फॉरेन की AI से रिलेटेड जो सबसे विश्व की बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 5, उनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो कैसे इंडिया में आएँ और उन डेटा सेंटर्स को एक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। टॉप 5 उसमें अमेज़ॉन है, उसमें गूगल है, उसमें बड़ी कंपनीज़ हैं। मेडिकल टूरिज़्म एक अपने आप में जो 5 जगह स्टेट के साथ और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मेडिकल टूरिज़्म को 5 हब्स बनाने की बात कही गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है। इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट वर्ल्ड ओवर बहुत चीप है और इसको मार्केट में इसको हमें सेल करना है और इसको हमें इससे
न सिर्फ हमारी फॉरेन एफडीआई एफपीआई वो सब इंक्रीज होगी, बस बल्कि इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के हब्स, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स, जो फास्ट रेल नेटवर्क कॉरिडोर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वर्ल्ड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में रोज आगे बढ़ रहे हैं, उसी से वही एक बदलते भारत की, एक बढ़ते भारत की बुनियाद है। और उस दिशा में बहुत से डायरेक्शन, मदर ऑफ ऑल डील्स की अभी हम बात कर रहे थे। हमारी जो चैलेंज हमें यूएस इकॉनमी से आ रहा है, यूएस की तरफ से, तो हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हैं, उसको अब यूरोप में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी जो ईयू है एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जो हम हैं, दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड, उसे सही शब्दों में कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इन सब का इम्पैक्ट भारत के ग्रोथ पे, भारत के ग्रोथ मोमेंटम पे, भारत के फिस्कल कंसोलिडेशन पे, हमारी जो जिस दिशा में एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, हर दिन उसमें चीज़ें आ रही हैं। और एक विजनरी बजट, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है ये, एक बहुत ही विजनरी बजट है जिसमें आपको बहुत सी मॉडर्न चीज़ों का समावेश किया गया है। आप जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि उसमें ईवी हो गया, उसमें सेमीकंडक्टर्स हो गई, उसमें और भी जो सोलर से रिलेटेड इशू, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको टैक्स हॉलीडेज़ दी गई हैं। और ट्रेड को भी जिस तरीके से, बिकॉज कोई भी कंट्री अगर वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ बढ़ता है तो उसमें ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करना है SEZ और बाकी माध्यम से, इन सब का इस बजट में प्रावधान है। अलग अलग जगह विस्तार से बताने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बट अदरवाइज इट इज़ अ ऑल एनकम्पसिंग बजट, अ बजट विच विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लीप, as I say कि नेक्स्ट बाई 2030 और लेट्स से 2035 जो हमारी ग्रोथ मोमेंटम है, उस ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहे। और साथ में भी जो हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन है, जो हमारा केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हमारा डेट टू GDP रेशियो है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 2030 तक डेट टू GDP रेशियो को हम 50% तक ले आएंगे। और ऑलरेडी जो हम उसको हम जिस स्पीड से कम करना है, इस साल वो 54 या 53 के आसपास रहेगा, एंड बाय 2030 वी वुड बी अचीविंग दैट टारगेट। सो ऑल इन ऑल, in this it's a very visionary budget and a budget in the right direction and a very balanced budget. मनोज जी, जब आपसे बात कर रहे थे MSME पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीच में प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और जिस बात को यहाँ पर हम उठा रहे हैं, जिन बिंदुओं को, उस और प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा विस्तार से इशारा किया है। तो MSME की बात करें, उसको थोड़ा सा नई शक्ति देने का प्रयास किया गया है, उद्योग जगत को जो है और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर MSME से सरकारी खरीदी बढ़ाई जाएगी, इस पर जो है जोर दिया गया है। वस्त्र उद्योग में रिफॉर्म लाए जाएंगे और मेगा टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण भी होगा और खेलों के सामान बनाने पर भी जो है भारत आत्मनिर्भर बन पाए, उस और भी जो है हम लोग काम करेंगे। ये एक दिशा रही इस पूरे बजट की। आप इस दिशा को कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप। मैं कह रहा था कि आप इस बजट में जहां देखेंगे आप MSME की झलक पाएंगे। उदाहरण के तौर पर AI का मैक्सिमम एप्लीकेशन, ठीक है, बड़े कारपोरेट से तो होना ही होना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर और MSME उसमें शामिल होता है। दूसरा, अगर देखते हैं कि जिन इंडस्ट्रीज को इसमें हाईलाइट किया गया है, मैं नाम ले रहा हूं कि बायोफार्मा शक्ति में भी आप पाएंगे कि MSME सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। टेक्सटाइल अगर आप जाएंगे तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है कि बिना MSME के ये सेक्टर अपने को पूरी तरह से स्थापित कर नहीं पाएगा। और चूंकि अब इस समय हमारे पास एक मजबूत आधार है, मजबूत सपोर्ट है, मजबूत इकोसिस्टम है, इसलिए MSME का जो उद्गम फिर से हो रहा है। और एक बात जो शुरू में उसमें छूट गई थी, वो ये था कि 200 स्थानों पर जहां पर MSME हुआ करते थे, जिसको इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहा गया, वो MSME के क्लस्टर थे।
वो खत्म हुए। मान लीजिए कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कानपुर बात करते हैं, अगर हम इसी प्रकार से वाराणसी की बात करते हैं, कई और हमारे इस प्रकार के क्षेत्र हैं, अब उनको रिवाइव करना, नए कलेवर में रिवाइव करना। तो जो स्थापित है वो जो पुराने थे उनको रिवाइव करना। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो मामला आता है और स्पोर्ट्स गुड्स, आप खुद जो हमारे यहाँ का एक मजबूत, आपको बताता हूं कि एक्सपोर्ट आइटम भी है हमारे ये स्पोर्ट्स गुड्स का, और जो हमारे यहाँ खेलों के है, पिछले बजट में इसकी चर्चा काफी हुई थी, और अब उसको वो है टॉयज का। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, एमएसएमई का हम देखते हैं तो उसमें ट्रेडिंग भी शामिल है या सर्विस सेक्टर भी उसमें शामिल है। जिस प्रकार का हमारे यहाँ आज के दिन, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हम चर्चा करते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वहां टूरिज्म प्रमोट करना। हु विल प्रमोट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? इट इज नॉट द कारपोरेट। टूरिज्म इन इंडिया इज बीइंग लार्जली प्रमोटेड बाय एमएसएमई सेक्टर। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो आज कल्चरल टूरिज्म कह लीजिए, रिलीजियस टूरिज्म कह लीजिए, उसका हब बन चुका है, वहां पर कौन सबसे ज्यादा है? एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है। फिर इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कई और क्षेत्रों में, मान लीजिए द्रोण दीदी की जैसे पहले हुई चर्चा, या यहाँ पर एआई का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होना है, हु विल प्रोवाइड दिस सपोर्ट? इट इज द एमएसएमई सेक्टर। कहने को एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, लेकिन हु इज गोइंग टू बी द फैसिलिटेटर? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द एमएसएमई सेक्टर। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि तमामों और एक्टिविटीज है केंद्र सरकार लॉन्च कर रही है और स्टेट के माध्यम से भी लॉन्च कर रही है। तो हु आर द सपोर्टर ऑफ दैट, हु कैन ट्रांसलेट दैट टाइप ऑफ थिंग इनटू एक्शन? ये सीधी सी बात है, एमएसएमई सेक्टर। इसलिए एमएसएमई सेक्टर कोई आज के दिन चैरिटी नहीं रहा, दे आर द क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित भारत में ले जाने का काम करेंगे। नंबर एक, आप देखेंगे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम आगे बढ़े, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि एमएसएमई सेक्टर को हमने प्रमोट किया। नतीजा क्या हुआ? आज जो हम लोगों के पास डेटा छन छन के आ रहा है, ऑफिशियल डेटा तो अभी नहीं आया है, वो सेंसस से आएगा, कि आप देखें कोविड के बाद से उत्तर प्रदेश से अन्य जगह का जो आउट माइग्रेशन होता है उसमें कमी आना प्रारंभ हुआ है। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और आज भी है, वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, तो उसमें एमएसएमई भूमिका निभा रहा है, नंबर एक। दूसरा, जो इमर्ज कर रहे हैं, बहुत सेक्टर्स खोले हैं आज। मान लीजिए क्लाउड के लिए बात होती है, तो क्लाउड के लिए बात होने में ठीक है, कारपोरेट्स आगे आएंगे सबसे पहले, लेकिन अल्टीमेटली कौन ट्रांसलेट करेगा उसको एक्शन में? दे आर गोइंग टू द एमएसएमईज। तो हमें एमएसएमई सेक्टर को बहुत करीने से समझने की आवश्यकता है कि वो कहां कहां फिट हो रहे हैं। यूं समझिए, भारत का जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमें मजबूत करना है, तेजी से बढ़ाना में कारपोरेट्स भी चाहिए, बड़े उद्योग भी चाहिए, लेकिन बिना एमएसएमई के कनेक्ट दोनों के बीच, पब्लिक के बीच में, स्मॉल होल्डर्स, लैंड होल्डर्स बीच में, बिना एमएसएमई के कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरा बार बार यही आग्रह रहेगा कि एमएसएमई को हम हर बार नए रूप में देखेंगे तो हमें नए भगवान इसमें दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। और संजीव जी, थोड़ा सा अगर मैं हायरिंग और ग्रोथ रियलिटी के हिसाब से बजट को समझना चाहूँ, तो बजट स्पीच में जीडीपी ग्रोथ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बताया गया है कि जॉब यही है। अब ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो एचआर और रिक्रूटमेंट जो फर्म्स हैं वो क्या देख रही हैं? क्या कंपनीज अब एक तरह से मैं कहूँ कि एक्सपेंशन और हायरिंग को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं? इसको कहा जाए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो फोकस है, और एवरीथिंग इज डन टू इंश्योर दैट आवर यूथ गेट एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, इट्स अबाउट 6 to 8% largely, but if you look at the unemployment rate of the youth, it's maybe in double digits, maybe 11-12%. So जो सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। पहला, there has to be an opportunity, which means there has to be an industry who can employ them, and the secondly, you need to have that skill to be part of that job in that industry, right? तो आई थिंक फोकस दोनों चीज़, पहले ग्रोथ को क्रिएट किया जाए। जो ग्रोथ हमने क्रिएट की इस बार, दैट वन ऑफ द ड्राइवर इज़ ऑफ कोर्स द कंजम्पशन केपेक्स, एंड जो एमएसएमई में अब बूस्ट है, जो अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम कोशिश कर रहे हैं करने की, जो एफटीए हमने किया है, इस सब से क्या होगा? इस सब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी।
तो डेफिनेटली जो हायरिंग ट्रेंड है वो बढ़ेगा. आज इंडिया विल बिकम ए कॉम्पिटिटिव प्लेस फॉर पीपल टू बी प्लेस बेस्ड आउट ऑफ हियर. जैसे कि हमने अपनी लीडरशिप पोजीशन सॉफ्टवेयर में ली है, ऐसे ही हम धीरे धीरे वो लीडरशिप पोजीशन हर स्पेस में लेंगे. आज सिर्फ सर्विसेज में ही नहीं उसका टारगेट है, इवन हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहते हैं. हम प्लेन्स भी बनाना चाहते हैं, हम शिप्स भी बनाना चाहते हैं, हम डिफेंस के सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, हम हर चीज़ करना चाहते हैं. और उसके लिए ही ज़रा फोकस है कि यही वो सस्टेनेबल ग्रोथ है जो हमें एम्प्लॉयमेंट देगी. तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये जो बजट है इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मेरे हिसाब से इट विल जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर एट द सेम टाइम दैट वी प्रोवाइड दो स्किल्स. सो आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है साथ के साथ जाना. अदरवाइज यू नो we professor said that it's a demographic dividend for us. We have one of the largest country which has a youth bulge, we call it. So I think इसको अगर हमें यूटिलाइज करना है तो आई थिंक ये दोनों को हमें मैरी कराना पड़ेगा और वही इस बजट का बेसिकली टारगेट है. प्रोफेसर राकेश, यहाँ पर आधारभूत ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है देश का, उसमें निवेश भी किया जा रहा है और इस बार भी उस बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल जिले देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी. ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम विकसित भारत के लक्ष्य को राज्यों सरकारों के साथ मिलकर राज्य सरकारों की एक चैलेंज रूप में राज्य सरकारों को उसमें से प्रतियोगिता करना पड़ेगा, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा. 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, यानी इसमें से अनेकों यूनिवर्सिटी आएंगे. 5 यूनिवर्सिटी टाउन जो उस राज्य की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक क्लस्टर के पास होगी, इसमें रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ये सारे की एक इकोसिस्टम बनेगी. ये नीति में प्रमाणित तथ्य है. अर्थनीति को बड़ा करना है तो उसको एक नॉलेज पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा. भारत की अर्थनीति नॉलेज बेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है. ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इसकी सहयोगिता राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा. ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. वैसे ही हमारी 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ABDC की जो एक नई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हुई है उसकी अगुवाई में इसे जोड़ते हुए 15,000 स्कूल्स में ABDC की पढ़ाई की जाएगी, कोर्स खुली जाएगी. उसकी हायर स्टैंडर्ड्स की कोर्सेज के लिए 500 कॉलेज में ABDC की कोर्सेज चलाया जाएगा. ये ऑरेंज इकोनॉमी को देश में, हमारे देश में गुणवत्ता की, सृजनता की, कला की कोई कमी नहीं है. उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए ये 15,000 स्कूल्स में कोर्सेस और 500 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में इस प्रकार के कोर्स, ये बहुत कारगर साबित होगी. पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID देश में अनेक स्थान पे काम कर रहा है. पूर्वी भारत में NID नहीं था. केंद्रीय बजट में इस बार पूर्वी भारत में NID स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है. ऐसे 4 जगह पे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह पे टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड और नया सेटअप किया जाएगा. एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार बजट में किया गया है. जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको जाने की पहले 5% की टैक्स देना पड़ता था. अपने जितना रेमिटेंस उनको देना पड़ता था, जिनका उनको फीस वगैरह उनके खर्चे के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था, उसमें 5% टैक्स लगती थी. इसको सरकार ने इस बार घटा के 2% किया. उसमें हमारी स्टूडेंट जाके एडवांस रिसर्च करना, पोस्ट डॉक्टरल करना और जनरल एजुकेशन में जाना और सुलभ हो जाएगी. एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में किया गया है.
एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज E2E स्टैंडर्ड कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें विकसित भारत की लक्ष्य को करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन AI एम्पावर स्कूल एजुकेशन SCRT को इन्वॉल्व करते हुए एकदम एक नई एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम देश में कैसे बनाया जाएगा। E2E स्टैंडर्ड कमिटी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इस बार NCERT हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस बार बजट एलोकेशन में NCERT की जो परंपरागत बजट होती थी उसमें से 14% की ग्रोथ हुई है। ये NCERT हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंट प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हमारा NCERT है, जिसको गति देने के लिए NCERT के बजट को भी बढ़ाया गया है। अन्य 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आज यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। जिस प्रकार की बच्चों के ऊपर डिस्ट्रेस होने की प्रायोरिटीज दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के बारे में खूब चर्चा की गई थी। आज बजट में उस विषय को आगे ले जाने, दक्षिण में बेंगलुरु में निम्हांस एक बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके काम कर रहा है। देश में दूसरी निम्हांस बनाने के लिए भी बजट में अनाउंस किया गया है। मैं मानता हूँ बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए इस प्रकार के एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे और 2 संस्था के बारे में उल्लेख किया गया। नाइस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो अभी की 7 नाइपर है उसको अब मैंने अच्छा किया जाए। उसके अलावा 3 नाइपर और खोला जाएगा। इसमें देश में 10 नाइपर हो जाएंगे। ये भी एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म पे पहले हमारे देश में IIHM संस्था दायित्व में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अनेक राज्यों में सरकार की ओर से काम कर रहा है, अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। इसको थोड़ा अपस्केलिंग करते हुए सरकार ने इस बार बजट में निर्णय किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोली, उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसकी मानक और बढ़ेगी, उसकी कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी। ये सब निर्णय भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय जिस तरह से सभी सेक्टर काम कर रहे हैं, सभी सेक्टरों में बजट में भी ध्यान दिया गया है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में EV सेक्टर है और हम बात करें तो सोलर की बात करें, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पे लगातार काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोटेक के MD। सर, कैसे देखते हैं रमन भाटिया जी आप इस बजट को, और किस तरह से देखते हैं जो सोलर एनर्जी की हम बात करें, EV की हम बात करें, तो आने वाला भविष्य इसी सेक्टर का है। तो जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको कैसे देखते हैं, और विकसित भारत का जो रोड मैप है 2047 का, उसको देखने के लिए आज जो ये बजट एलोकेशन है उसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे आंकते हैं? बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इस बार, क्योंकि वो भी एनर्जी में जो उन्होंने बहुत फोकस किया है पिछले टाइम में, अब उसका पूरा प्रेशर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो इस टाइम इंफ्रा पे बहुत जोर है, और इंफ्रा को स्टेबल करने के लिए एनर्जी स्टोरेज का बहुत बड़ी मांग है और उसकी जरूरत भी है। तो उसके लिए लिथियम बैटरीज के इम्पोर्ट पे काफ़ी सारा काम किया है गवर्नमेंट ने। कुछ ड्यूटीज़ में एग्जेम्पशन देने की कोशिश हो रही है। प्लस जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्जीक्यूशन, ये जो बजट है वो मोर फॉर एग्जीक्यूशन है, नॉट मोर फॉर इंसेंटिव और सब्सिडी। तो अगर हम एग्जीक्यूशन पार्ट को देखें तो उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अगर हम एग्जीक्यूट ठीक से कर लें ग्राउंड, 2047 की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो हो सकता है वो 2047 हमारी ज़िंदगी में 2035 में आ जाए। इस दिशा में काम हो रहा है जी। जिस तरह से आज की दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों पे ज़्यादा डिपेंडेंस की बात करें, हम EV की बात करें, तो दोनों में बैटरीज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल आ जाता है। वहीं हाल ही में एक चर्चा भी रही है, बात करें सिल्वर की, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। और सिल्वर का रोल जो हाल ही में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हुए हैं। उसको देखते हुए क्या चैलेंजेस आपने महसूस किए हैं कि आने वाले समय में होने चाहिए, और उसके लिए सरकार का स्टेक क्या है?
जो सिल्वर है वो अपने आप में कोई डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं होता कि सिल्वर लगाया उससे गाड़ी बन गई या बैटरी बन गई। सिल्वर का यूज़ होता है कंपोनेंट्स में, राइट। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए, मेक इन इंडिया किया जाए और जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो भी इंडिया में बनाए जाएं, इस पे काफ़ी जोर है। अगर वो ऐसा हो जाता है तो इंडिया बहुत जल्दी सेल्फ रिलायंट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। जी, अगर हम बात करें, आपने बोला कि चिप की आपने बात करी यहाँ पे, तो उसको लेकर जिस तरह से प्रोत्साहन सरकार लगातार दे रही है और आत्मनिर्भर होने की अगर हम बात करें, इतना तेजी से आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले वर्षों में हम सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मैंने आपको जो बोला मैं उसी बात को फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एग्जीक्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। जो बिग सब्सिडीज इंसेंटिव्स हो गए, अब अगर हमें फैक्ट्री लगाने के लिए कोई इंसेंटिव दे दिए गए हैं या कहा दिया गया कि आपको मिलेगा, तो अब पहले तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम प्लान कर रहे हैं कि वो 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, हम उसको कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना हम AI को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इसमें IT, AI इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगर हम एग्जीक्यूशन में ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बहुत तेज़ी से रोल आउट करना शुरू कर दें और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। सेंसर टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बात रखें, थैंक यू। तो ये थे, इन्होंने बताया सर्वोटेक के रमन भाटिया जी, सर्वोटेक के MD हैं। जो आने वाला वर्ष है वो सोलर एनर्जी और EV सेक्टर का रहने वाला है। सेंसर टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। आने वाला समय ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। जी हाँ, विकसित भारत के विजन के साथ पेश हुए बजट 2026 में एक चीज तो साफ है कि जो फोकस है वो रिफॉर्म, रफ्तार और राहत पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बजट आम टैक्स पेयर की जेब तक राहत पहुंचा पाएगा? इनकम टैक्स स्लैब में कोई TCS में कटौती, मैट में राहत, नया इनकम टैक्स एक्ट और मार्केट से जुड़े कई बड़े फैसले। तो आज की चर्चा बजट 2026 में जानने की कोशिश करेंगे क्या बदला टैक्स पेयर्स के लिए। और इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान भी जुड़े हैं। टैक्स लॉ और मार्केट के सबसे भरोसेमंद नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर SC अग्रवाल जी, CMD हैं SMC कैपिटल लिमिटेड के। हमारे साथ मौजूद हैं संजय शरण जी, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड CGST। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं 2 बहुत खास मेहमान, GS पन्नू जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट इनकम टैक्स एपिलेटेड ट्रिब्यूनल यानी ITAT के, और साथ ही मुकेश भूटानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर BMR लीगल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, और मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। और इस चर्चा को हम फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं। बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री ने अपना 9वां बजट पेश किया और इस उपलब्धि के लिए भी पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। लेकिन बजट में क्या कुछ खास है? 48 लाख करोड़ रुपए का जो ये बजट है, और अगर इस इंफ्रा की बात करें तो पिछले साल 11.2 लाख करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया था, अलोकेट किया गया था। और इस बार जो एक तरह से जो विकास की जो रफ्तार है, जो गाड़ी है, उसे किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो 22 नए जलमार्ग विकसित करने का प्रावधान किया गया है और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर, 200 से ज़्यादा लीजेंडरी एक तरह से इकोनॉमिक वो भी उन्होंने तय किया है। तो अग्रवाल साहब हमारे बीच में हैं और इस सवाल को थोड़ा सा और आपके साथ साझा करते हुए हम आगे बढ़ें। सरकार ने खास तौर पर एक ध्यान दिया, उसने सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल पर, और इसे लेकर के उस में एक कॉरिडोर भी जो है उसको आइडेंटिफाई किया, जिसमें उड़ीसा आ जाता है, आंध्र आ जाता है, केरल आ जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर विजन है, जिसके कनेक्शन कई बार चीन से जुड़ जाते हैं, जिसके कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गहरे जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, AI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो चाइना है उनका बहुत लीड रोल है। बिल्कुल 90% मार्केट शेयर उनका है। और US, इंडिया, वो सबको एक तरीके से ब्लैकमेलिंग कह लीजिए या डिक्टेशन वो करता रहा है। तो इंडिया इसके लिए अभी जो 4 स्टेट जहां ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का माइंस हैं, उसको एक स्पेशल कॉरिडोर और स्पेशल फोकस करके उस पर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंसेंटिव देना चाहता है, सो दैट हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर पिछड़े नहीं रहें और हम आगे बढ़ें।
और यही कोशिश है, इसलिए इस बजट के अंदर प्रावधान हुआ है, इस पर स्पेशल फोकस दिया गया है। 4 स्टेट को आइडेंटिफाई किया है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड वन मोर स्टेट है। तो उसमें वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर रहेगा गवर्नमेंट का, और इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज ये AI मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सब जगह रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है। और इसके बगैर आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अपने मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स सब जगह इनका यूज है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस दिया है। मतलब नई दुनिया में एंट्री लेने के लिए इस पर अपना दबदबा जरूरी है। बिल्कुल दबदबा जरूरी है। हम यदि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट की है नहीं, यदि हम इस पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें अपने को इस चाइना या किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहें। जिसकी एक्सपर्टिज्म है उसको हम कोलाबोरेशन में एज ए पार्टनर ले लें प्रोडक्शन के अंदर, और वहाँ पर भी इंसेंटिव दिए गए हैं जो हमारे साथ कोलाबोरेशन करेगा। बिल्कुल अग्रवाल जी, हमारे साथ जीएस पन्नू साहब जुड़े हैं वर्चुअल माध्यम से। पन्नू साहब, बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब तो नहीं बदले हैं, लेकिन कंप्लायंस और प्रोसेस को आसान करने की बात की गई है। क्या समझें कि बजट दरों से ज्यादा टैक्स सिस्टम में सुधार पर फोकस दिखता है या फिर कुछ और है? और साथ ही ये जो एक्ट है, कानून की भाषा ही बदलेगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। एक चीज मैं आपसे शुरू में आई जस्ट टू मेक अ ओपनिंग रिमार्क बिफोर आई कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने दिए हैं। यू सी ओवरऑल बजट और जो बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में बजट प्रेजेंट किया आज फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो वो बहुत ही क्रिएटिव। 2 चीजें बड़ी साफ नजर आई। एक तो कंसिडरिंग द बैकग्राउंड, इंटेंट क्या होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, वो क्लियर है। सेकेंडली जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर है। नाउ द थर्ड थिंग इज के एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट की गई हैं, कैसे डिप्लॉय की गई हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को कहाँ फोकस किया गया है, वो एरियाज अगर आप देखें तो बहुत ही सुकून मिलता है, इन द सेंस दैट इट शोज दैट वी हैव अ गवर्नमेंट व्हिच इज विजिलेंट एंड इज अवेयर ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड द वे फॉरवर्ड व्हिच इज टू बी कैरिड आउट। ऑफ कोर्स वी हैव द प्लान फॉर विकसित भारत तो 2047 तो उसके संदर्भ में दिया जा रहा है। बट कमिंग बैक टू योर टैक्सेस, यस, there is no change in the tax rates for the taxpayers, either individual or the corporates or the non-individuals, other categories also. Yes, the opportunity has been used to do some fine-tuning and also clear out some procedures. I would not say that everything has been done and everything cannot be done in a single shot. So therefore, it's a welcome measure. जो भी provisions को थोड़ा rationalize किया गया है. Then TCS also जहाँ थोड़ा sore points थे, when TCS collection at the time of education, payment of education under the liberalized foreign exchange remittance scheme में, overseas packages में, so those are things which is facilitating. Plus taxpayers where there could be a default on their part of and they're requiring, has been a simplified version on that too. Updated returns अगर किसी को फाइल करनी है to correct some mistakes, there also some liberalization has been shown. Of course, there are some fine tune जो हमने देखा है, स्पीच में कवर नहीं था FM के, 2-4-5 ऐसी लीगल कंट्रोवर्सीज चल रही थी टैक्स फील्ड में। One relating to some tax limitation, period limitations on making of assessments, उसको एड्रेस किया गया है by way of making retrospective amendments. I will not go into the rights or wrongs of that amendment, but the fact is at least litigation की एक certainty की और एक उस तरफ बढ़ने की बात हो रही है। बिल्कुल पन्नू साहब, हम आपके तरफ फिर आएंगे एक बार, और हमारे साथ संजय शरण हैं, आप पूर्व GST कमिश्नर हैं। और इस सारी चर्चा को जो पन्नू साहब कहने की कोशिश कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा और अगर एलुबरेट करने की कोशिश करें, टैक्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। आप GST कमिश्नर रहे हैं और आप ये भी देखते हैं कि उसमें कितने सारे अमेंडमेंट करने, यहाँ भी कहीं पर कोई कमी लगी, वहीं पर रेगुलेशंस को चेंज करने की कोशिश हुई। और ये कहा जाता है कि जो आज इतिहास में जितने भी कानून आज तक बने हैं, उनमें GST एक ऐसा कानून है जिसमें सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि GST में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म है। जब GST गवर्नमेंट ले आई तो गवर्नमेंट उसमें 33 और
मेरे ख्याल से 40 है, मेरे ख्याल से 40 टैक्सेज एंड सेसेज इन सबों को 30 या 40 टैक्सेज या सेसेज को सब्स्यूम किया गया और जीएसटी को लाया गया और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, जैसे आपको इनपुट टैक्स, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स था, इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर आपके जो ट्रक्स या लॉरीज जो गुड्स को कैरी करती क्रॉस करती थी वहाँ रुकती थी, बॉर्डर्स को एबॉलिश कर दिया गया और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किया गया। एक ई वे बिल पकड़िए और चले जाइए देश में। ई वे बिल पकड़िए, ई वे बिल लीजिए, जनरेट कीजिए और साथ में इनवॉइस जनरेट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ई वे बिल अगर आप, जैसे आपने ई वे बिल की बात की, तो एक स्टेट में अगर एक बार उसको चेक कर लिया। फ्रेंड्स, फर्स्ट द ऑनरेबल Finance Minister will make her opening remarks. Thereafter, we will take some questions. Please remember, identify yourself and your organization's name. And I would request you to ask one question only so that your friends can be accommodated. Thank you very much. Over to Honorable Finance Minister. Good afternoon. This is the customary press conference that we hold with all the secretaries. You've heard the entire budget being presented in the Parliament. So as opening remarks, I'll just highlight some of the points which we want to. But subsequently, of course, we'll answer all your questions. All the secretaries are here with me. So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue within to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his business to prosper, or for farmers for greater productivity or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man, and above all, development. Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities, creating a cadre of people, not cadre in that sense, but a bulk of people who can come in as health workers. Also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan. Mental health has also received a lot of attention. So these are the side for Viksit Bharat and making sure Sabka Vikas hoega. But the idea is the advantage and the momentum that we gained since after COVID by increasing public capital expenditure will continue. We've announced that 12 lakh crores are coming through public expenditure this time. It is 4.4% of the GDP. I'd like you all to please notice that, which is the highest, at least in the last 10 years. It could even be highest if you were to take data earlier. No increment in capital expenditure, sustained fashion, has happened ever before. This one marking 4.4% of the GDP. Then what are the kind of things which will happen through it? You will have dedicated freight corridors. I've named Dankuni in the east, Surat in the west. Then I've also highlighted that 20 new national ways, not national highways, national waterways are being planned. And again there, those are going to pass through some of the critical mineral areas. Orissa, where the mineral-rich state is taking it to the port, and the two ports have been identified, Paradip and Dhamra. Similarly, we are also making sure that the coastal cargo movements will be enabled through a cargo route, so that
through the coastal area, we are able to cut down on cost of movement of goods. City economic regions, developing them is a very big new measure that we're coming up with. And for that, an allocation of 5,000 crore per city economic region. Imagine the amount, 5,000 crores in 5 years, 1,000 crore per year per city is being given, and the emphasis is going to be largely on tier 2, tier 3 cities. And then talking of infrastructure further, with the capital expenditure coming with the big number, you're having also the high-speed rail corridors, 7 of them announced, and the destinations are clear, so that they become the bridge for all these economical robust centers. So those are for making sure that the infrastructure and the capital expenditure are getting tied up, and the country benefits from the ripple effects that these can bring in. The 7 strategic and frontier sectors in which we've highlighted that will increase productivity and also have new investments come in and give emphasis for India's own brand on those things is on the, I think that's going to be a big change in the way in which we are looking at giving capacity for those who are able to research, who are able to undertake research and development. So 10,000 crore initiative again over five years for domestic biologics and biosimilar production. This is a clear message and enough substance that India's lead in the pharmaceutical sector should be kept intact, but at the same time bring in newer ways of helping the pharma sector, and also because it has an impact on human health. Semiconductor mission had 2 major announcements that will improve the India stack and also the IP related matters. Electronics manufacturing scheme for 40,000 crores is a major encouragement for electronics to become self-sufficient. We have also announced establishing rare earth corridors so that India can face and be able to meet its own requirements with its materials. So once we identify and are able to explore these, process them, make them available for us, our dependency on external sources for bringing in the rare earths will be lesser, and we've identified that we want to establish this rare earth corridors. They are going to be in Orissa, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So these are very important developments, and they are going to have multiple decadal impact on the Indian economy. Our dependence on magnets and rare earths will be brought down. 3 dedicated chemical parks, again for reducing our import dependence. High-tech tool rooms for research, that will be set up in 2 locations. Very important thing is about the construction equipment being imported. That could be for building tunnels or metros or high energy and also heavy duty equipments which we are relying on imports. We want to manufacture them in India. And how does it affect a common man? It affects because firefighters today have novel, new, big ticket and small, very small firefighting tools and weapons or equipments. We don't have them in this country. That's why if there is a fire accident in some very congested area, our equipments are not able to reach those points, whereas there are equipments which today are produced abroad, which can navigate those small corridors and go save people's lives. Whether they or huge ones, all of which we want to make sure that we will have production in this country itself, whether they are tunnel boring or anything else, from small to big, we want to bring in those very impactful infrastructure into India manufacturing. Then container manufacturing is another which we'll support. I think I've gone in detail talking about the textile support in various forms. One very important announcement was made, Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative, which will make sure khadi, handloom, handicrafts will all be brought in, and one district, one product will all in this initiative, and we'll be able to support
rural artisans, rural workers, and handloom weavers in those areas. Legacy industrial corridors have got saturated. Manufacturing is now very constricted because they are not able to bring in newer robotics and others. So we want to upgrade these legacy industrial clusters so that they become cost competitive and efficiency comes into these places. Even more important is the champion MSMEs, small and medium industries, entrepreneurs, MSMEs, who are going to be given all the support, and three-pronged approach is being taken up there. We are giving equity support, we are giving also liquidity support, above all professional support for them, so that the equity support is supported by a 10,000 crore SME fund, growth fund. Above all, we are also topping up the Self-Reliant India Fund with 2,000 crores. So MSMEs should not feel any dearth of resources for equity. Similarly, they shouldn't feel any difficulty for liquidity in